मैं जाते जाते संख्या आशीर्वाद से अब देश में 10 लाख लोगों का अच्छा काम हो गया है। ये लोग जो है सारे दिल्ली में ही निवास करने वाले हैं, अलग अलग वॉइस आंध्र एसोसिएशन है और बंगाली समाज अच्छी संख्या में है, उड़ीसा समाज में 16 लाख लोग हैं, महाराष्ट्र मंडल के 7 ब्रांचेस है, तो सबका हमें संपर्क है। और ऐसे सारी जो सोशल लीडरशिप में आए हुए हैं हमें कार्यक्रम में बात विचारे जी सब एक सहयोग से ही पूरा ऐसे करें यहाँ से कोलकाता गोवा सब जगह इस प्रकार के कार्यक्रम मुझे भागवत आया है 2011 में वो आए कार्यक्रम स्मृति ईरानी जी आई है और ऐसे दिग्गज नेता आज तक आशीर्वाद देंगे उसको देश में प्रगति से क्योंकि हर जिला केंद्र पर कम से कम 12 कई 100 शहर ढूंढ के निकाले जहाँ 16 से ज़्यादा राज्य और ऐसे अच्छे वही संस्कृत के लोग हैं। एक जज है रामस्वामी सारे रहेंगे और एक प्रकार का सिम्पोजियम भारत अमर सुनिए ममन चितलाई भारत माता की जनता जनार्दन बैठी है, भारत का लोकतंत्र है। मुझे आभास हो रहा है कि आज की पीढ़ी हमारी माटी की सुगंध को नहीं पहचान पा रही है, तो हमारे ओज के कवि जगन्नाथ भट्ट को प्रदर्शित किया जाए, उनकी शौर्यपूर्ण आला का प्रदर्शन किया जाए। मेरी सुनने की इच्छा होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्हीं की लाइन है, 2 मिनट में आप उसका आनंद लीजिएगा। किस तरह युद्ध किया आजाद हिंद फौज ने। अरे लिया तिरंगा तब सुभाष ने और जय जय हिंद किया। धन्यवाद ओंकारेश्वर पांडे जी। भारत देश अपने आप में एक अनोखा देश है। इसकी आबोहवा, खान पान, जलवायु, भाषाएं सभी में विविधता के दर्शन होते हैं। भारत भारती को जिन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया, ऐसे भरत भाई का स्वागत करेंगे, सुभाष जी का स्वागत करेंगी, रेशु गुप्ता जी। अपने एलजी विनय कुमार सक्सेना जी बहुत खुश है कि वे दिल्ली के नागरिकों को संबोधित कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे भारत को संबोधित कर रहे हैं। तो केरल के जो बंधु आए हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। केरल के राजस्थान धरती भोरारी, हर हर महादेव। इतनी बड़ी संख्या में असम के लोग आए हैं। कामाख्या देवी से प्रदेश है असम में आए हैं। असम के साथ महाराष्ट्र के लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा के लिए तारीफ पर जोरदार बुद्धि चाहिए। इसके बाद में पर पहले सिंधी समाज का हम लोग आह्वान करते हैं। सिंधी समाज अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जय बोल। बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। एक बार जोर से ताली हिमाचल की। अब मेरे एक है इस छोटे से
that underscores the richness and strength of our interconnected states. In a world that is marked by differences in culture, language, religion, and traditions, it is easy to focus on what sets us apart. Yet, when we shift our perspective, we realize that these very differences are that the efforts towards realizing the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for Ek Bharat, Shrestha Bharat and Samriddh Bharat has started to take shape. The concept of Ekatmata is beyond Rashtriya Ekta. Rashtriya Ekatmata is based upon internalizing Bharatiya Bhavana, Indian consciousness in our spirits as a core uniting thread. This bhavana or consciousness is not limited to or bound by any religion, language, region, race, creed, and caste. It is that all-pervasive and all-encompassing Indianness that has its roots in our ancient civilization ethos. These ethos having shaped themselves over many millennia are not Hindus, Buddhists, Muslims or Christians. They have no sectarian identity whatsoever. Our ancient civilization ethos have only one identity. From the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, we see the whole world as one family and pray for the happiness and good health of all. Our national identity has emerged through a long-drawn process of confluence, assimilation, and coexistence. As Gurudev Rabindranath Tagore had said, and I quote, "No one knows at whose beckoning call how many streams of humanity came in indomitable waves from all over the world over the millennia and mingled like rivers into this vast ocean and created an individual soul that is called Bharat." It is this soul called Bharat that lies at the core of Rashtriya Ekatmata. It is way beyond and way more positive than Rashtriya Ekta. As a person born and brought up in Uttar Pradesh, I got to make my professional career in Rajasthan and Gujarat. When I got the opportunity to serve the Khadi and Village Districts Commission, I had the privilege of interacting with core and soul of entire India. In places as distinct as Northeast, Bengal, Bihar, Jharkhand, Karnataka, Ladakh, Jammu and Kashmir, Goa, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim and Kerala. Almost entire India. And let me tell you, this core and soul, all across, despite being diverse, was only Bharati in nature. Bharati Ekatmata is an embodiment of, as one of the former president, Bharat Shri Pranab Mukherjee had said, perennial universalism of 1.3 billion people who use more than 120 languages and 1600 dialects in their everyday lives, practice 7 major religions, belong to 3 major ethnic groups, and live under one system, one flag, and one identity of being Bharatiya. Unquote. We have no enemies, no identity other than being Indians. I appreciate the efforts of Bharat Bharati, which started Rashtriya Ekatmata in 2005 from Surat. It has been heartening to note that the initiative has grown today in more than 16 states of the country with active leaders and volunteers dedicated towards the strengthening and unification of souls of sons and daughters of Ma Bharati. Our Honorable Prime Minister, who has also visited and blessed this wonderful initiative in early 2010 as the then CM of Gujarat, always dreams of a prosperous and united India. Many of statutory, regulatory and strategic reforms by the Government of India have contributed significantly in not only simplifying the ecosystem with one Bharat spirit, but also inspired all of us to work with selflessness towards the strengthening One India with Vision 2047. I am practically impressed
I'm particularly impressed to see that Bharat Bharati is moving ahead with a noble agenda of unifying one Bharati Atma, which is at the core of Bharati Pragati and Samriddhi. Diversity of India is an example for the world because we are living with peace and harmony despite great variation in terms of culture. Innovative solutions regarding how we can drive Rashtriya Ekatmata dialogue further across different states and regions of India. Today, the world is talking about sustainable development. Our Bharatiya Parampara, irrespective of geographical boundaries, present a great example of sustainability in action since time immemorial. Today, the entire world is looking at India for its remarkable achievements and growth under the leadership of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi. It provides us with a great opportunity to present the unique model of unity with diversity for one Bharat to the rest of the world as a model of inclusive global development aimed at one humanity, one world. Rashtriya Ekatmata balances social and economic aspects of development with focus on prosperity, peace and progress. We have made great progress in uniting the spirit of one Indian culture through a series of initiatives and programs. I am happy to see that Bharat Bharati has been pioneering this concept of One India, which later became an essential part of Ek Bharat, Shrestha Bharat. I am confident that this event by Bharat Bharati under the leadership of Shri Vinai and his youthful team, who have dedicated their entire life for the cause of strengthening the spirit of Ma Bharati and among masses and classes, will prove to be a milestone that will drive the cause of Bharati Ekat youth. I am delighted to see that a pictorial book, Rashtriya Ekam Prabha, which focuses on noble, courageous and exemplary efforts of our beloved Prime Minister, is being compiled and will be released in due course. I am sure the book will help in further disseminating the thought of Rashtriya Ekatmata. As the Lieutenant Governor of Delhi, I assure you of my full support for this noble cause of unifying the nation. Once again, I congratulate all present here on this grand occasion of the Rashtriya Ekatmata Sammelan. इन शब्दों को चरितार्थ करते हुए आपके उद्बोधन के लिए श्री विनय कुमार सक्सेना जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, हम आपका आभार मानते हैं। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा विनय पत्राड़े जी से, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भारत भारती, कि वे स्मरणिका मोमेंटो से हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री विनय कुमार सक्सेना जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अनुग्रहीतोस्मि। भारत भारती के राष्ट्रीय एकात्मक संबोधन में पधारे हुए मुख्य अतिथि उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपने कीमती समय निकालकर यहाँ आए। विनय भाई पत्राले विशेष रूप से तैयार किए जा रहे एक कॉफी टेबल बुक, जिसमें उनकी एकात्मता संबंधी जो यात्रा है, देश भर में वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं स्थानीय वेशभूषा पहनते हैं, स्थानीय भाषाओं में लोगों को एड्रेस करते हैं और लोगों के दिलों को छू लेते हैं। यह एक राष्ट्रीय एकात्मता प्रवाह है। इसके पहले आज़ादी के समय हमारे पूर्व गृह मंत्री उस समय के और सरदार पटेल ने जब 500 से ज़्यादा रियासतें अलग अलग थीं, तो उनको एक साथ जोड़कर भारत के तिरंगे के नीचे लाने का कार्य किया था। और आज देश भर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
विभिन्न धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों और समुदायों के लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं, उसी यात्रा को इस कॉफी टेबल बुक में समेटा जा रहा है, जो भारत भारती के लिए गोल्डन सिग्नेचर्स ने तैयार किया है और शो क्राफ्ट ने उसको डिजाइन वो उसको कर रहे हैं और इस तीनों के सहयोग से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके कवर पृष्ठ का आज हम लोग विमोचन माननीय उपराज्यपाल महोदय के कर कमलों से करने का गुजारिश करते हैं।